Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics to discuss. So let's start. The first topic says about the India assumes monthly presidency of UNSC. तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट अगस्त 2021 में इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाले थे. तो टुडे under India's December presidency of the UNSC, there are two signature events at the ministerial level that should be scheduled in around December 14 for reformed multilateralism and December 15 for counterterrorism. तो ये यहाँ पे इंडिया का मेन मकसद है which you can see is in the top priority today about India. So India assumed the presidency of this UNSC on December 1, 2022 for the month of December. And it is the second time in its 2-year tenure as an elected member of the UN Security Council in 21 and 22. So, during India's December presidencies, many high level events will take place to discuss terrorism and regional security issues that the world faces in the present times. Okay, so India under this presidencies, the main key events which I have said you, first one being the reform multilateralism, and second one saying about the counter terrorism. So in this, India will hold a open level on maintenance of international peace and security. Also, यहाँ पे न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा, where the current multilateral architecture will be re-envisaged. Okay, so India will try to have the cooperation of all the members under UNSC so that they could at least go ahead with some of the process against this respective two issues that the whole world is facing today. Okay, also there will be at least two meetings with Ukraine, and during its 8th term as an elected member of the UNSC, India has endeavored to voice the key concerns of the global south. So a bust of Mahatma Gandhi will also be inaugurated at the United Nations during India's presidency, and it will be unveiled by External Affairs Ministers S. Jaishankar and UN Secretary General Antonio Guterres. ठीक है, सो हम लोग जानते हैं कि इंडिया एंड यूएनएससी का जो रिलेशन है, India has been a non-permanent member of the United Nations Security Council for 8 terms, while the most recent being this term of 21-22. India is also a member of the G4, a group of nations who back each other in seeking a permanent seat of the UN Security Council. Also, India is one of the advocate in favor of the reformation of the UNSC, where India is also a part of the G77. तो G20 का भी पार्ट है, G77 का भी पार्ट है. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म का बात चल रहा है, ठीक है, दैट इज द नॉर्म्स. ये एक मेजर इशू है जहां पे एक हाई ओपन लेवल डिबेट किया जाएगा, सो दैट इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन दिस टू इश्यूज वेयर इंडिया इज वेरी मच इम्पैक्टेड विद. ठीक है, तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे अभी हम लोग का प्रेसिडेंटशिप आएगा. तो देखते हैं इन दो दिसंबर 14 और दिसंबर 15 में आउटपुट क्या निकल के आता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. सेंटर टू कट फंड्स इफ लैंड इज नॉट एलोकेटेड फॉर हाउसिंग स्कीम्स. तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण का जो एक प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टेट्स, ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स अपने एरियाज, बिकॉज लैंड इज डायरेक्टली कमिंग ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे स्टेट से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है, स्टेट्स लैंड एलोकेट नहीं कर रहे हैं, सो दैट दिस बेनिफिशियरीज कुड गेट सम ऑफ द फ्री हाउस होल्ड्स अंडर दिस PMAYG. तो हम लोग जानते हैं दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना. ओके, सो दिस प्रधानमंत्री आवास योजना which main aim is to achieve the housing for all by 2022 था, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक ये 2 साल बढ़ा दिया गया है, तो अभी 2024 तक का एक प्लानिंग है. ओके, सो ये पहले था इंदिरा आवास योजना which was reinstructed to प्रधानमंत्री आवास योजना with effect from 1st April 2016. तो यहाँ पे PMAYG में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व है, एंड यहाँ पे इनका एम है टू प्रोवाइड सम ऑफ द पक्का हाउसेस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल रूरल फैमिलीज हु आर होमलेस और लिविंग इन कच्चा और डिलापिडेटेड हाउस बाय द एंड ऑफ मार्च 2022. लेकिन यहाँ पे अभी बढ़ा के मार्च 24 का एक रिस्पेक्टिव एम किया गया है. ओके, so who were basically these beneficiaries? The peoples belonging to SCs, STs, free bonded laborers. Okay, तो ये सब
disabled person, next of kin of defense personnel killed in action, तो ये सब beneficiaries रहेंगे. ठीक है. सो कॉस्ट शेयरिंग यहाँ पे कैसे है? द कॉस्ट शेयरिंग विल बी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट between 60:40, okay, and in plain areas, and basically 90:10 in northeastern and hilly areas. So it was initiated with a target of completing around 2.7 crore households. Okay, but so far, according to database maintained by the Union Rural Development Ministry, hardly we can see 1.8 crore houses have been constructed. So this is around 67.72 of their target, percent of their target. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? Because many number of states has not allowed their respective lands to be where from where we would construct this respective पक्का houses. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा we could see that offender, the worst offenders और states like तमिलनाडु, जहाँ पे इतने लोग बेनिफिशियरी अभी तक नहीं मिला है, महाराष्ट्र, इवन असम भी है, उड़ीसा भी है, बिहार भी है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा तरक्की किया किसने? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश. तो ये लोग ने अपना जमीन एलोकेट कर दिया था. तो यहाँ पे वही सेंटर अभी बोल रहे हैं कि अगर आप लोग लैंड एलोकेट नहीं करेंगे तो हम लोग जो फंड्स है ये कट करेंगे, एंड दिस विल बी वेरी मच ऑफ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू इन द कमिंग टाइम पीरियड्स. तो इसी के लिए ये बेसिकली न्यूज में था. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. Songs promoting drugs and guns prohibited. So recently we could see that even the center prohibits radio channels from playing songs promoting drugs, guns or wants of action. तो जो भी एफएम चैनल्स सॉन्ग्स प्ले करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, ग्लोरीफाइंग अल्कोहल, ग्लोरीफाइंग ड्रग्स, वेपनरी, गैंगस्टर, गन कल्चर, तो इनके ऊपर क्या हो जाएगा? इनके ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया गया है. ठीक है, सो द यूनियन गवर्नमेंट हैज डायरेक्टेड प्राइवेट एफएम चैनल्स टू नॉट प्ले दिस सॉन्ग्स. Okay, and the government warned radio channels of penal actions if they fail to adhere to the code. तो ये बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था पंजाब में. So to address the issue of gun culture in the state, the Punjabi government recently approved an order banning the public exhibition of guns, including on social media, as well as songs that celebrate the violence and weaponry. Okay? So the state's population makes up around 2% of all Indians. However, it represents more than 10% of all firearm permits in the nation. So Punjab police control 1/5 of all firearms in this province. So Punjab reported 2073 gun violence related instances between 2016 and 2020 according to the report of NCRB. तो आज यहाँ पे जो गन कल्चर है, ये गन कल्चर क्यों है? Because of the Punjab's militant period, which lasted from 1978 to 1983, and this can be linked to the region's current gun culture. Okay. Also, we could see that the state issued several permits to own firearms at this time. Another way to see the culture is as a result of the Green Revolution. The increased wealth of the peasantry made it easier for them to purchase firearms, which eventually developed into a symbol of status in Punjabi societies. So the problem has a religious component as well. Weapons like kirpans are an essential component of the state's dominant Sikh faith. And over time, the notion that weapons are an essential component of the Sikh Garba and a representation of the Sikh pride and identity became profoundly ingrained in public psyche. So the prevalence of firearms in the state is correlated with the popularity of the Punjabi pop music, particularly songs containing lyrics about guns and visuals of males brandishing firearms. So this guns culture's normalization in Punjabi popular culture has long been a source of worry. And the Punjab and the Haryana High Court took notice of this issue in 2019 and ordered the DGP of these two states to stop songs that promote this alcohol, drugs and violence from being played and performed. So आज अगर कोई पूछे कि is the government orders justified? See, the new decree issued by the Punjab government has drawn criticism from being a knee-jerk reaction to the ongoing concerns of the state's law and order situation. So critics are asking how the government could impose such a restriction and obliterate a 50-year-old tradition. In an era of social media, there are concerns regarding how the government would carry out such a directive. And such responses from the government demonstrate its propensity to treat the symptom rather than underlying the problem. So it should be remembered that outlawing a piece of our art, particularly in today's technology, advanced society, can actually encourage its popularity. So the state is still paying for its period of militancy, and one relic of that period is the culture of guns. So it would take more than a restriction of few songs to address Punjab's problem with its gun culture. So the problem may be resolved by addressing the existential distress and alienation experienced by the state's youngsters. तो इसी के बेसिस पे जो
यहाँ पे पंजाब लेके आए थे, तो यहाँ पे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी एक्टिव हो गए थे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डायरेक्टली क्या किया, इवन दे केम अप with this FM channels who are basically playing this Punjabi songs, who are focusing much more and glorifying much more towards alcohol, drugs, weaponries, gangster and gun culture. So recently Punjab mein a constable was also booked for glorifying some of the songs, that is glorifying the guns as well as all such number of activities, okay, which can promote some number of differences of this people with the rest of the country. ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे ये न्यूज में थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टूरिस्ट एक्सचेंज बिटवीन रशिया एंड केरला। तो अभी यहाँ पे जो रशिया और केरला के बीच में हम लोग का जो एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दो रशियन is in Kerala in Kerala Museum, Kerala. So they were directly attending the Russian Travel and Tourism Fair in Thiruvananthapuram. तो हम लोग जानते हैं कि we have got deeper correlation in respective to culture. About 20 Russian institutions, including some of the leading universities and schools, regularly teach Hindi to about 1,500 Russian students. Apart from Hindi, we could see languages such as Tamil, Marathi, Gujarati, Bengali, Urdu, Sanskrit, Pali are taught in these Russian institutions. Also, the Indian dance, music, yoga, Ayurveda are among few other interests that people of Russia enjoy. A festival of India in Russia was held in Russia between the period of September 2018 to March 2019. And this was performed in around 22 cities with 34 performances by 10 groups showing the best of Indian music, dance, food, and spiritual traditions. On October 2, that is the birth anniversary of Mahatma Gandhi, an exhibition dedicated to the 150th anniversary of this person and about his friendship with the Russian writer Leo Tolstoy was opened at the State Duma of the Russian Federation. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे जो हम लोग के आज कोऑपरेशन में एनहांस कर रहे हैं, ये बेसिकली ये कल्चर है। टुडे वी हैव गॉट पीपल टू पीपल कनेक्शंस विद रिस्पेक्टिव टू रशिया। आज रशिया को इंडिया में कौन नहीं जानता है, ठीक है। सो रशियंस वेरी मच फेवरिंग द कंट्रीज एंड एग्रेसिवली गोइंग ऑन फॉर सम नंबर ऑफ कल्चरल गैप्स जो बचा हुआ है, उस कल्चरल गैप को ब्रिज करने का काम कर रहे हैं कौन, ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऑफ इंडिया। Okay, so creating a cross-cultural awareness among travelers in both Russia and the state is a much need at this hour. So, okay, so we could see that on the one hand, Russia is increasingly tuning its focus on countries such as India. Okay, and on one side, we could see that they are invading the countries like Ukraine. Okay, so we see that Russia के जितने भी लोग थे, इनका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन थे कहाँ पे, कोलंबो में, श्रीलंका में, वाज वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस। तो ये हम लोग थोड़ा चेंज करके डाइवर्ट करके केरला की तरफ हम लोग थोड़ा अपना उनका इंटरेस्ट माइग्रेट करवा रहे हैं। ठीक है, सो देखते हैं इन दिस टाइम पीरियड हाउ वी कैन वेरी मच अचीव द relations that we have between the people of Russia as well as the people of this country. Okay, so even statistics from the Kerala Tourism Department also reveals that there was a steady increase in Russians visiting Kerala until 2019. So in 2017, the number was Russian is around itna, and where it rose to around 35,000 by the time period of 2019. So ये एक increase है of the respective terms that we have with Russia, and Russia even considers India to be one of the friendlier countries. So Russia का आज दो लाइक चार पांच ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेंडलियर कंट्रीज है, एंड इंडिया कम्स अमंग्स दिस टॉप 5 फ्रेंडलियर कंट्रीज। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे एक्सचेंज, यहाँ पे जो टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे रशियंस लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं हम लोग कि वी हैव मच मोर टेंडेंसी टू क्रिएट हॉटस्पॉट फॉर ऑल द टूरिस्ट कमिंग इन फ्रॉम दिस रीजन ऑफ रशिया। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ न्यूज पे थे। देन कमिंग टू द ई रूपी, ठीक है, तो यहाँ पे वी सी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल रूपी लॉन्च। ठीक है, सो ये क्यों न्यूज में है, बिकॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द इंडियाज मच अवेटेड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको बोलते हैं हम लोग CBDC, ओके, विच इज अ शॉर्ट ऑफ ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी, लेकिन इट्स नॉट अ क्लियर कट ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, सो CBDC is basically a legal tender issued by a central bank in digital form. And this means that it is the same as a fiat currency and is exchangeable one-to-one with the fiat currency, but different in its own form. So this RBI has often expressed worries about the private cryptocurrencies, basically Bitcoin हो गया, Ether हो गया, तो ये सब private cryptocurrencies है, which is being used for money laundering, terror financing, and tax evasions. So the introduction of its own CBDC has been viewed as a means of bridging the benefits and risks of digital currency. तो आज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन ई रूपी, देखो ई रूपी जितना ही आएगा उतना रिड्यूस करेंगे क्या, ऑपरेशनल कॉस्ट, दैट मींस इट विल इन्वॉल्व इन फिजिकल कैश मैनेजमेंट।
ओके, जितने भी फिजिकल कैश मैनेजमेंट है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा. ऑल्सो इट विल गिव फॉर faster financial inclusion. It will make or improve the transparency in money flows and could help reduce currency substitution. Okay. Also, it will bring resilience, efficiency, and innovation in the payment system. And if I tell about that, the public with the same benefits, just like a private virtual currency offer, but without the risks. So therefore, this launch of a retail digital rupee is basically a pilot project which will launch by the time of December 1. Okay, ये first phase of the pilot project है that will cover select locations and banks in a closer used groups, which will comprise participating customers and also the merchants. So if I say it will be potentially available for use by all the private sector, non-financial consumers and businesses, and it will also provide some of the safe, secure payment and settlement, as it will be the direct liability of the central bank. So the working, if I say, the e-rupee would be in the form of digital token, and it will be issued in the same denominations as a paper currency and coins, and it will be distributed through intermediaries, that is by the banks. Okay, so unlike cash, it will not earn any interest and can be converted to other forms of money like deposits with banks. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल एग्जांपल्स भी हम लोग के पास. Supposedly, if I see about the July 2020 में, there were nearly 100 digital currencies by various global central banks. Okay, and two fully launched, basically the e-naira in Nigeria and the Bahamian sand dollar. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल करेंसी है, ई नायरा और बहामियन. बहामियन, ओके, BAHAMIAN, बहामियन सैंड डॉलर. सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक नाइजेरिया का है ई नायरा और बहामियन बहामस का है. So country have different motives for exploring and issuing the CBDCs, but the Bahamas issued them to serve unbanked and underbanked populations. तो आज हम लोग भी ये डिजिटल करेंसी यूज कर सकते हैं जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी तक नहीं हुआ है, so that we could make and integrate more and more number of people in the financial autonomy of our country. तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये ई रूपी का एक डिजिटल टोकन एज विच विल बी कंसिडर्ड टू बी अ लीगल टेंडर यहाँ पे प्रोपेगेट किया जा रहा है. ठीक है, so that's with this e-currency which you can see in our country. So the pilot will kickstart in 4 banks: State Bank of India, ICICI Bank, Yes Bank, and IDFC First Bank. Okay, and that will be in 4 cities, basically Mumbai, New Delhi, Bengaluru, and Bhubaneswar. तो हम लोग को यहाँ पे आते आते अभी टाइम लगेंगे, because 4 other banks, be it the Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC, and Kotak Mahindra, will join this pilot eventually, and it would be also extended to other cities such as Ahmedabad, Gangtok, Guwahati, Hyderabad, Indore, Kochi, Lucknow, Patna, and Shimla. ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम लोग के यहाँ पे आने के लिए टाइम है, बिकॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी प्रॉमिस्ड that the CBDC will aim to fulfill the promise of affordable, safer and easier payments for all. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ दिस ट्रांजेक्शन इन डिजिटल रूपी कैन टेक प्लेस बिटवीन पर्सन टू पर्सन एंड ऑल्सो पर्सन टू मर्चेंट एज पर द RBI स्टेटमेंट्स. ओके, सो ये बेसिकली हम लोग का अभी न्यू जनरेशन का एक रेवोल्यूशन है. तो अभी देखते हैं कि ये हम लोग कितना सक्सेस कर पाते हैं और कितने लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन में ले आ पाते हैं. ठीक है, सो दैट्स द थिंग एसोसिएटेड विद दिस CBDC. नेक्स्ट आता है लास्टली द एडिटोरियल. तो यहाँ पे बोला गया है अबाउट दैट हाउ आफ्टर सम ऑफ द लेटेस्ट ग्लोबल स्लोडाउन, जितना भी लाइक ऊपर नीचे हम लोग का इकोनॉमी हुआ है, फिर भी हम लोग का इकोनॉमी विथ the growth rate, it is still in some of the balanced views. So GDP is projected to have grown around 6.3% from the year earlier period, and the sub deceleration from 13.5% expansion posted in the first quarter. And on the gross value added, only 3 of the 8 sectors, basically agriculture, trade, hotels, transport and communication, and financiality, we have seen that यहाँ पे अभी acceleration हुआ है अभी growth का. Because today we see that in our respective economy, okay, so we can see there are some of the key highlights of our achievements. We have achieved major number of milestones. The size of the economy has also increased. Today we are directly the 5th largest economy. Okay, also we could see the GDP per capita has directly increased. The poverty income or the poverty level has often been reduced to some extent. ठीक है, पूरा तो reduce नहीं हुआ है, लेकिन often to some extent we have reduced it. The Human Developmental Index, okay, which is comparatively far behind some of the developed countries, but still
we have make a good improvement in recently a decade. ठीक है, जो हम लोग के इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज है because of the slowing exports and rising imports, देख लो रशिया के साथ, unpredictable weather because of the uneven monsoon that is likely to wake upon agricultural good and rural demand, inflation rise हो रहा है because there has been continuous rise in the inflation about 6% for 7 straight months. So इसी की वजह से हम लोग का जो हायर एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइसेस है ये रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं. And therefore, we could see that today, even on this number of categories, today, despite inflation, the credit conditions must remain supported of the real economy. तो यहाँ पे सपोर्ट होना, एक सपोर्ट लाना यहाँ पे हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है. तो also because of these challenges coming into prominence, we could see that policymakers can ill afford to drop their guard as they battle to re-growth sapling inflation and must ensure that credit conditions remain supportive of the real economy. तो उसी के बेसिस पे ये जो इकोनॉमी के बारे में बोला गया है अबाउट इंडिया, आउट ऑफ सच नंबर ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन, स्टिल इंडिया कैन डायरेक्टली मैनेज टू बिकम द ग्रोथ रेट, द इंजन ऑफ ग्रोथ रेट. एंड ऑल्सो यहाँ पे बोला गया है इवन यूएन के द्वारा भी कि इंडिया विल ग्रो फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 5.3% इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर. So therefore, in this scenario, instead of having some number of conditions which are not favoring India, still India is managing to have a balance of its economy. तो उसी के बारे में यहाँ पे राइटर के द्वारा मिक्स बैग में एडिटोरियल में डिस्कस किया गया था. ठीक है, so that's we have seen the 5 number of MCQs. Please do attempt these MCQs and do join our WhatsApp as well as Telegram channel for further updates. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.